तबे स्टार्ट करबा आ जहा रहला यस मैम। तो हमें देखिले हमर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड देन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देखिले देन एबे आथिला पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ए जो बोर्ड अपॉइंट हेले सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड as the case may be may constitute such committees and for such purposes or purposes as it may think fit तो सेमाने हमर जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड सेमान जदी भी किछि पर्पस पई का जोटा कि हमर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अंडर सेमानकर किछि भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करिया पई से मान से पर्पस पई चाहिले गोटे कमिटी सेटअप करि परिबे The committee shall meet at such time and places and shall observe that such rule or procedure in regard to the transaction of business at its meeting as may be prescribed. जो कमिटी रहे सेमाने मीट माने सेमाने गोटे मीटिंग अपॉइंट करि मीटिंग शेड्यूल करि परिबे at any time or any places then the members of a committee shall be paid such fees and allowance for attending its meeting as may be prescribed. तो से कमिटी जो माने मेंबर रहबे सेमानक पय किछि फीस दिया हबो सेमाने से मीटिंग को अटेंड करिया पय ताको फीस दिया हबो then provided that no fees shall be payable to a member who is an officer of government or any corporation established by any law for the time being in force तो जो माने गवर्नमेंट रो ऑफिसर रहले कि आउ को कॉर्पोरेशन कि को लॉ रो किछि ऑफिसर रहले जो माने के मीटिंग अटेंड करसे ताको कोनोसी फीस दिया जीवनी केवल जो माने ए कमिटी रो मेंबर्स थिबे ताको ही फीस दिया जीवो Then appointment of registering officer. According to section 6, the appropriate government may by an order notified in the official gazette appointed such person being gazetted officers of government as it thinks fit to be registering officer for the purpose of this chapter. तो जो माने हमर appropriate government जी रहिला से माने हमर establishment रे कि हमर जोठी कि जो हमर रहिला जोठी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अछंती सेठी चाहिले गोटे registering office appoint kari paribo and define the limits within which a registered officer shall exercise the power conferred on him by or under this act तो से जो हमर जे registering officer appoint हबो ताको भी define कर देबे तार लिमिट कोन देन तार से केबेठु तार पावर को एक्सरसाइज करि परिबो then registration of certain establishment को establishment रहले से माने act under registration नै परिबे The appropriate government may by notification in the official gazette fix time period for making such application with respect to the establishment generally or with respect to any class of them. It is provided that the registering officer may entertain any such application for registration after expiry of the period fixed in this behalf if the registering officer is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause for making the application in time. तो एथिरे जो एस्टाब्लिशमेंट माने रहिबे सेमान जदि रजिस्ट्रेशन हबा चाहिबे सेमान एप्लिकेशन दे परिबे और से एप्लिकेशन ता को हम जे रजिस्टरिंग ऑफिसर हैला से जदि भी से एप्लिकेशन ता आफ्टर ड्यू डेट रिसीव करूची तो जदि भी से पाइला सफिशिएंट कॉज पाइला देन से ताको एक्सेप्ट करि परिबो और जदि सेंति किछि वैलिड कॉज नथिबो देन से चाहिले रिजेक्ट करि परिबो जोटा कि से ड्यू डेट परे रिसीव करछ एप्लिकेशन if the application for registration is complete in all respects, the registering officer shall register the establishment and issue to the principal employer of the establishment a certificate of registration containing such particular as may be prescribed. और जदि भी सबू registration process जहाँ भी रहिला registration रो तो सब फुलफिल हे गला तो हमर registering officer रहिला से establishment को सबू establishment मानकर जो वन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रहिले ताको गोटे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करबो section 7 of the act read with rule 17 subsection 1 of the contract labor central rule 1971 rules mandates that every principal employer of an establishment to which this act applies in time limit so fixed make an application in triplicate in from form 1 to the registering officer in the prescribed manner for registration of the establishment accompanied by treasurer receipt showing payment of the fees for the registration of the establishment तो जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉयर रहिले ऑर्गेनाइजेशन ना से माने
गोटे एप्लिकेशन बनेबे इन ट्रिप्लिकेट मान 3टा कॉपी बनेबे गोटे जहाँ से जहाँ भी एप्लिकेशन देथिबा से एप्लिकेशन रो गोटे कॉपी सेंड करिवे रजिस्टर ऑफिस को और रजिस्टर ऑफिस को ता सहित ट्रेजरी रिसीप्ट माने से जो फीस पेमेंट करथिबे तार रिसीप्ट को भी से माने सेंड करे रजिस्टर ऑफिस पाखको. Then such application shall be either personally delivered to the registering officer or sent to him by register post. ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ personally ସେଇଟା send କରିପାରିବେ ନହେଲେ post through ରୁ ତାଙ୍କ register office ମାନଙ୍କୁ send କରିବେ. Then ଆସିଲା the registering officer may at his discretion entertain any such application for the registration after expiry of the period fixed in this behalf upon being satisfied that there is sufficient cause for delay. तो सेम कथा जोटा कि से जो ड्यू डेट पर जो एप्लिकेशन रिसीव करिवो सेटा जे सफिशिएंट कॉस्ट थिबो सेटा को एक्सेप्ट करिवो. Then the registering authority under rule 18 of the contract labor central rule 1971 shall issue a certificate of registration in form 1 annexed to the rationalization of forms and reports under short-term labor law rules 2017. Further, Rule 18 subsection 4 of the Act mandates that if there is any change in the particulars specified in the certificate of registration, the principal employer of the establishment shall intimate to the registering officer within 30 days from the date when such changes takes place the particular of and the reason for such change for continuous compliance. तो जदि हमर जे रहला प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जेतोल से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिसीव करबो से जदि देखिबो जे किछि चेंजेस हेछि सेतिरे तो से 30 डेज भीतर से चेंजेस और रीजन टा से सेंड बैक करबा रजिस्टरिंग ऑफिस पाखको. The registering officer shall maintain a register in form 3 showing the particular of establishment in relation to which certificate of register have been issued by him. तो जेतेबेले registering officer किछि registration certificate issue करिवो जो establishment मानको तांकर से record रखिबो और by showing all the particulars of the establishment of establishment ର ସବୁ record registering office ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର. Then ଆସିଲା revocation of registration in certain cases. Revocation ହେଲା cancellation को cases रे registration ଟା cancellation ହେଇଯିବ. So Section 8 provides that if the registering officer is satisfied either on a reference made to him in this behalf or otherwise that the registration of any establishment has been obtained by misrepresentation or suppression of any material fact. जदि जेतेबेले registering officer से देखु notice करूची जो establishment टा किछि misrepresentation करूची जे माने किछि मिस statement provide करूची by suppressing any material fact. जहाँ भी material fact means किछि important fact जोटा कि से suppress करची माने ताकु लुचाउची कि ताकु शो न कराउची then तार misrepresentation करची से टाइम रे से चाहिले ताकु रिवोक करि परिबो. Or that for any other reason the registration office has become useless or ineffective and therefore requires to be revoked, the registering officer may revoke the registration. तो जेतेबेले भी से कि देखुची जे registration ता एते यूजफुल नुहे देन सेटा इनइफेक्टिव होची से टाइम रे भी से चाहिले ताकू रिवोक करि परिबो कैंसिल करि परिबो. Rule 19 prescribes the circumstances in which the application for registration may be rejected. आपको case रे रिहेडा reject हे परिबो से application टा. If any application for registration is not complete in all respects, the registering officer shall require the principal officer to amend the application so as to make it complete in all respects. जो application टा जेतेबेले हमर principal employer provide करथिबो registering officer को जे से registering officer notice करिछि जे सेटा ସବୁ aspect ଯାହା ବି ରହିଲା ସେ ସବୁ fulfill ହେଇନି ସେତେବେଳେ ସେ ସେଟାକୁ send back କରିବ principal employer କୁ to amend the application ମାନେ ସେ application ଟାକୁ update କରିବ amend କରିକି then again send କରିବ. If the principal employer on being required by the registering officer to amend his application for registration omits or fails to do so, the registering officer shall reject the application for registration. और जेतेबेले principal employer को जेतेबेले से notice टा आसिला जे amend करिया पई जदि से सेटाको omits or fails to do so जदि से सेटाको करिबारे सेटाको amend करिबारे fail होउची then the application टा revoke हेजिवो. Then
जदि गोटे तापर आसला इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन जो फार्म रे ए एक्टा लागिबा कथा जदि से एस्टाब्लिशमेंट ताको रजिस्ट्रेशन न करजी देन तार इफेक्ट कोन according to section 9 no principal employer of an establishment to which this act applies shall employ contract labor in the establishment after the expiry of period under section 7 in the case of establishment which is required to be registered under section 7 but which has not been registered within the time fixed for the purpose under that section. तो जो एस्टाब्लिशमेंट रे ए एक्ट अप्लाई हबा कथा यदि अप्लाई न हेची ए एक्टा देन से एस्टाब्लिशमेंट रे से माने कोनोसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करि परबे नाही आ जदि टाइम लिमिटेड एक्सपायरी परे से माने अपॉइंट करिवे देन से मानको पई तांकर भी किछि पनिशमेंट अछि जोटा के हमें पेनल्टी अंडर से पढिबा. Then the act mandates that the principal's employer should be registered and the contractor have a valid license prior to engaging contract labor. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से जदि भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करिया चाहउछंती ताको से माने ए एक्ट को से माने ए एक्ट अंडर रे से माने रजिस्टर्ड हबा पड़िबो आ जो माने कॉन्ट्रैक्टर जो माने कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट करिवे गोटे एस्टाब्लिशमेंट रे से मानको पखर प्रॉपर लाइसेंस थिबा दरकार विदाउट लाइसेंस से अपॉइंट कर परबेनी. The prohibition of employment of contract labor एटा हला माने को सेक्टर कि को केसेस रे हेडा रेस्ट्रिक्शन अछि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट करिवार. According to section 10 the appropriate government may after consultation with the central board or as the case may be a state board prohibit by notification in the official gazette employment of contract labor in any process operation or other work in any establishment. तो हमर सेंट्रल गवर्नमेंट आ बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट देन हमर स्टेट गवर्नमेंट जो माने बोर्ड अपॉइंट हेचंती से माने चाहिले ऑफिशियल गैजेट रे नोटिफाई करिकि किछि एस्टाब्लिशमेंट मानको नोटिस देबे जे से माने ताको एस्टाब्लिशमेंट अंडर रे से माने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करि परिबे नाही बट बिफोर इशूइंग एनी सच नोटिफिकेशन इन रिलेशन टू एस्टाब्लिशमेंट the appropriate government shall have regard to the condition of work and benefits provided to the contract labor that establishment and other relevant factors such as तो जेतेबेले बोर्ड स्टेट बोर्ड आ सेंट्रल बोर्ड इश्यू करिवे नोटिफिकेशन से माने ता पूर्वरु ए सब कंडीशन को भलो भाबे नोटिस करिवे जेमति कि वेदर प्रोसेस ऑपरेशन और अदर वर्क इज इन्सिडेंटल टू और नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑक्युपेशन दैट इज कैरिड ऑन इन द एस्टाब्लिशमेंट. तो से जो एस्टाब्लिशमेंट रे जहां भी ट्रेड बिजनेस आ किछि मैन्युफैक्चरिंग होउची इंडस्ट्री होउची सेठी से लेबर अपॉइंट करिवार किछि नेसेसिटी अछि कि नाही वेदर इट इज पेरेनियल नेचर that is to say it is so sufficient duration having regard to the nature of industry trade business manufacture or occupation carried on that establishment. तो से एस्टाब्लिशमेंट जो माने एग्जिस्टिंग अछंती जो माने सेठी अछंती प्रीवियसली से माने सेटा को से माने सफिशिएंट कि नाही से वर्क को कंप्लीट करिबार वेदर इट इज डन ऑर्डिनरी थ्रू रेगुलर वर्कमैन in that establishment or an establishment similar thereto तो सेठी जो माने रेगुलर वर्कमैन रहिले से माने सेटा कंप्लीट करि पाउछंती कि नाही आ then whether it is sufficient to employ considerable number of full time workmen then से माने यदि सेठी चाहिबे कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंटमेंट न करिकि जो होल टाइम वर्कमैन अपॉइंट करि परिबे कि नाही ए सब फैक्टर को से माने स्टडी कला परे ही जाईकि नोटिस प्रोवाइड करि परिबे. Then appointment of licensing officer and licensing of contractor जो माने contractor रहिले तांकर लाइसेंस दरकार से माने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंटमेंट करिया पई तो सेथि पई से माने की लाइसेंस प्रोवाइड करबा हमें तो कहबे लाइसेंसिंग ऑफिसर. तो appointment of licensing officer according to section 11 the appropriate government may by an order notified in the official gazette appoint such person being gazetted officer of government as it thinks fit to be licensing officer for the purpose of this chapter and define the limits within such a license officer shall exercise the power conferred on licensing officer by or under this act. तो जेमति हम रजिस्ट्रिंग ऑफिसर रो जेमति पावर डिफाइन करा जिवो सेमति जेतेबे लाइसेंसिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट करा जिवो कॉन्ट्रैक्टर मानको लाइसेंस प्रोवाइड करिया पय तांकर भी जहा पावर लिमिट से सब को प्रीवियसली डिफाइन करबा को पड़िबो. Then licensing of contractor according to section 12 with effect from such date as the appropriate government may by notification in the official gazette
appoint no contractor to whom this act applies shall undertake or execute any work through contract labor except under and accordance with a license issued in that behalf by the licensing officer. तो ଯାହାକୁ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବନି ଯଦି ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବ। Then grant of license. According to section 13, every application for the grant of license under section 12 shall be made in the prescribed form and shall contain the particular regarding the location of the establishment, the nature of the process, operation of work for which contract labor is to be employed and such other particular as may be prescribed. तो लाइसेंस पाइंका भी हमर जो माने कॉन्ट्रैक्टर रहिले कि हमर जो माने एस्टैब्लिशमेंट रहिले से माने एप्लीकेशन दबाउ पड़िबो होचे एप्लीकेशन ने सब फॉर्म कंटेन फॉर्म और पर्टिकुलर कंटेन हे कि रहबो जोटा कि लोकेशन कोन আছে ओ एस्टैब्लिशमेंट रो देन को प्रकार रो प्रोसेस चलची मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देन ऑपरेशन ऑफ वर्क ए सब कोन चलची से एस्टैब्लिशमेंट से सब annexure देके दबाव पड़िबो। Every license granted under sub rule 1 or renewed under rule 29 shall be subject to the following condition. The license shall be non transferable. The number of workmen employed as contract labor in the establishment shall not on any day exceeding the maximum number specified in the license. तो हमर जेमती नॉर्मल हमर जदी तुम मानकर ग्रेजुएशन ने कि 10th रे सर्टिफिकेट थिबो सेटा तो तमे चाहेला आउ कानार करि परिबनी तो सेमती लाइसेंस भी जो कॉन्ट्रैक्टर मानकु दिया जाती से माने भी सेटा आउ काहा नेम रे करि परिबनी सो दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल। देन जेतिकी नंबर ऑफ वर्कमैन लेखा प्रेस्क्राइब थिबो जे को डे रे केति की अपॉइंट करिवे से हिसाब रे ही से माने अपॉइंट करिवे कॉन्ट्रैक्ट लेबर मानको ताठो अधिक एक्सीड करिवनी। Then revocation, suspension and amendment of license. Revocation means cancel, then suspend, then किछ amendment, किछ update माने किछ addition आनी ପାଇଁ license रे ता ପାଇଁ किछ rules अछि। According to section 14, if the licensing officer is satisfied either on a reference made to him in this behalf or otherwise that a license granted under section 12 has been obtained by misrepresentation or suppression by any material fact, the holder of license has without a reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which license has been granted or has contravened any of the provision of this act or rules made thereunder, then the license officer may revoke, suspend the license or forfeit the sum, if any, or any portion thereof deposited as security for the due performance of the condition subject to which the license has been granted. However, before taking any action, the license officer shall give the holder of the license an opportunity to showing the cause. तो लाइसेंस ग्रांट करबा पूर्व गोटे जदी लाइसेंसिंग ऑफिसर को किछि भी ता नोटिस अंडर आसिला जे सेटा सब जहाँ भी एप्लिकेशन रे दिया जाय से सब मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ मैटेरियल फैक्ट अछि तो से केस रे से चाहिले ताको रिवोक करि परबो ना कैंसलेशन करि परबो और जदी भी होल्डर ऑफ द लाइसेंस जो मन भी कॉन्ट्रैक्टर रहले से माने होल्डर ऑफ द लाइसेंस से माने जदी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज फेल टू कंप्लाई विथ द कंडीशन और जदी जहाँ भी हमर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अंडर जहाँ भी कंडीशन रहिला से माने जदी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज से सब को करबा को फेल्ड हेले देन से टाइम रे तांकर कॉन्ट्रैक्ट जो लाइसेंस रहिला से सब रिवोक हेइजबो आ से जेतबे रिवोक हबो सेतबे लाइसेंसिंग ऑफिसर हमर कॉन्ट्रैक्टर मानको गोटे चांस दबो जे तांकर भी कॉज रखिया पे। तो आज टाइम हे गला हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ जति के रहला पढिबा अपील नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। ओके थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लासेस हैव ए गुड डे और समस्त रोल नंबर वेलकम रोल नंबर टा मेसेज कर दियो जे करिना।